morning, it's 8 a.m. You're watching NDTV 24/7. I'm Parmeshwar Bava. Over the next 1 hour, we will be taking you through our top stories. Let's begin with the headlines. Precautionary measures are being taken in many states ahead of today's Bharat Bandh, call given by armed forces aspirants who are protesting against the Agnipath scheme. The railway commuters in Bihar will continue to face cancellations. The Railways has decided not to run 350 trains today. Internet shutdown in 20 districts of Bihar and tight security in the state in 11 BJP offices. Meanwhile, the forces say the concessions that have been announced in the last 5 days were not a response to protests and arson, but that those were already in the works. Rahul Gandhi to appear before the Enforcement Directorate for the 4th time. Permission was sought to appear on Monday instead of Friday. The ED has registered a new case against Rahul Gandhi in the Hawala case, taking cognizance of the ongoing trial court case in Delhi. And Maharashtra is set for another contest between the Aghadi and BJP. Total of 11 candidates are vying for the 10 MLC seats going on poll today. And an orange alert in the northeast. 9 dead in the last 24 hours due to the rain deluge. 1.8 lakh people have been shifted to 744 relief camps, but more rain in Assam and Meghalaya on the forecast for the day. The Prime Minister launches the historic torch relay of the 44th Chess Olympiad, which comes to India for the first time. Chess legend Vishwanathan Anand predicts at least 2 medals for our country. Right, breaking news just coming in. Several people have been shot at in Washington, D.C. We're being told police officers among those hit. A shooting in Washington, D.C. has left multiple people injured, according to preliminary reports. One officer has been injured. A spokesperson for the Metropolitan Police Department has said multiple people have been shot, including one police officer on U Street. What we do know is people have gathered at the scene. They were seen crying and holding each other. The police, however, has not immediately released information about a potential suspect. But a developing story there, a shootout in Washington, D.C., where several people have been shot at, and what we do know is one police officer has been shot at. Meanwhile, D.C. police has tweeted MPDs responding to the area of 14th and U Street for a shooting incident in which multiple people have been shot, including an MPD officer. Media staging at 15th and U Street. Chief continued to provide a media briefing. So we will have clarity as soon as that media briefing takes place. But what we do know is there is a shootout that has taken place in Washington, D.C., and several people have been shot at. And the D.C. Police Union has also tweeted, "We can confirm that one of 4 members working in the area of the 14th and U Street have been shot. The member has been transported to the hospital and is in a stable condition." Meanwhile, back on home ground, precautionary measures are being taken in many states ahead of today's Bharat Bandh call given by armed forces aspirants who are protesting against the Agnipath scheme. The government has ruled out a rollback of the scheme, and 350 trains have been cancelled in Bihar, which saw violent protests over this new scheme. The Bihar government has also increased security at party offices considered vulnerable. As of now, what we can tell you is internet services remain shut in 20 districts of the state. Meanwhile, if we look at Kerala, the police said its entire force will be on duty today to arrest anyone engaging in violence or destruction of public property. If we look at Jharkhand, schools have been shut amid the Bandh call. According to reports, the ongoing examinations of classes 9 and 11 have also been postponed. As far as Delhi is concerned, actually near Delhi, Gautam Budh Nagar, the police has said, prohibitory orders banning large gatherings have been put in place. People have also been asked not to disrupt the law and order.
Also, Lieutenant General Puri has said the centre did not give concessions in the Agnipath scheme because of protests and arsons, but that those were already in the works. Let's listen in. देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ. नो यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है. इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे. उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में. जैसे ही 3 दिन निकले और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ. नो, ये प्लान था. ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे. ये देश की ताकत है. इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है. ये प्रावधान करा गया है. एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी. पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%. कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन. कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी. तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो. Right, and BJP leader Kailash Vijayvargiya's offer to hire Agniveers as security guards at the party office in an effort to pacify protesters against the new military recruitment scheme Agnipath was pummeled by the opposition and also a member of his own party. The BJP National General Secretary had told reporters that young men who have completed the 4-year tour of the duty under the new scheme would get first preference for security guard jobs at the BJP office. In response, Mr. Kejriwal criticized the BJP leader for assuming young people who train to join the armed forces want the job of a security guard. सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना. जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र. यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल. 25 साल में जो वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा. मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा. And sharp reactions coming in from the opposition. In fact, Mahua Moitra has just tweeted that the BJP National General Secretary says, if I have to choose security guard for BJP office, I will choose Agniveer. She responds, yes, if India had to choose villain for Agnipath, I'm sure they'd choose you too. Meanwhile, AAP chief Arvind Kejriwal has also tweeted. He has said, do not disrespect the youth and army personnel of the country so much. The youth of our country work hard day and night to pass the physical exam, pass the test, because they want to serve the country for their whole life by going to the army, not because they want to be a guard outside the BJP office. And Congress's Dipinder Singh Hooda has also tweeted. He has said, is the pride of being an Indian soldier now at par with being a chowkidar of the BJP office? He has questioned, Kailash ji, you did a lot of politics on the army, but you could never understand the sacred spirit of patriotism that is flowing in the blood of a young man who goes out for a run at 4 a.m. to join the army. Meanwhile, Varun Gandhi of the BJP has also reacted to Kailash Vijayvargiya's ridiculous statement, saying there aren't enough words to describe the valour of the armed forces. The offer of being a security guard at a party office is a slight to their efforts. And Congress leader Priyanka Gandhi Vadra attacked the centre over the new scheme and said this scheme will kill the youth of the country
and it will finish the army. Urging the youth to recognize fake nationalists, Priyanka Gandhi assured her party's full support to those peacefully protesting the centre's Agnipath scheme for recruitment in the armed forces. She made the remarks as Congress MPs and leaders sat on a satyagrah at Jantar Mantar in solidarity with the youths protesting this new controversial scheme. वो कहां जाएंगे? की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है। And the BJP's Sambit Patra has slammed the Congress for carrying out a satyagrah over the issue. मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया। आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नक्सली बन जाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है? इफ दे आर ट्रेन्ड टू बी combat fighters, if they are trained to be in the army, they will turn naxals. आप इस देश के युवाओं के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं? And Prime Minister Modi just yesterday said it's India's misfortune that good intentions get trapped in politics. His remarks come amid nationwide protests against the centre's new military recruitment scheme. The Prime Minister, however, made no direct reference to the scheme in his speech, which was largely focused on the infrastructure and development work his government has been doing for the Delhi NCR region. हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। Now, amid the countrywide stir against the centre's Agnipath scheme for short-term recruitment of soldiers in the armed forces, Bihar has witnessed most widespread and violent protests. Now, let's listen in to some reactions coming in from Ground Zero. केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि सेना में भर्ती अब वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही करेगी, यानी कि अब जो भी भर्तियां होगी 4 साल के लिए होंगी और 4 साल के बाद उसमें से 25% जवानों को उनके मेरिट के ऊपर में चयन किया जाएगा आगे आने वाले वर्षों के लिए। हम अब फिलहाल पटना के पास नौबतपुर में हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं तैयारी करते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है कि अगर आना है तो इसी अग्निपथ स्कीम के अंदर आना होगा। नहीं सर, ये जो नियम है इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे? नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया जाएगा उसको तो क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है और जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही दब गिरा के रख देंगे। जितना सीमित सीट है सीमित में हम लोग रह जाएंगे। बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ, कुछ तो कुछ कमा लेगा। आरक्षण दे दीजिएगा तो वो आखिर सीट तो घटेगा ना प्राइवेट में भी। तो न्यू स्टूडेंट न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार। अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे? चमचागिरी करेंगे भारत सरकार के? देश का नहीं करेंगे। जाएंगे बॉर्डर पर कि
नहीं जाएंगे। आर्मी का जो जवान है ना सर, जो आर्मी का जो सेना में भर्ती के लिए जाता है, उसका सपना रहता है कि बॉर्डर पर जरूर एक बार जाकर देश का सेवा करे, ठीक है। अब वही सपना को जैसे कि चकनाचूर कर दिया गया है मोदी सरकार का जो ये नियम आया है ना सर, नया नियम, उससे बहुत ज़्यादा युवा को जैसे कि इतना आक्रोश होना एकदम लाजमी था कि जैसे कि इतना आंदोलन करे। भले जो भी ये आगजनी हुआ उसके आलोचना हुई है, ये सही बात है, लेकिन आप ग्राउंड पर पहुंचे सर, हम मतलब लगातार 2 साल से आ रहे हैं, पूरा एक साल 2 साल 3 साल भी लग जाता है आर्मी का दौर का तैयारी करने के लिए। उसके बाद भी पता है वहाँ जाकर भर्ती जहाँ होता है वहाँ पे मात्र जैसे कि यहाँ से मुश्किल से 2-3 बच्चों का होता है, इतना टफ दौर होता है। और उसके बाद भी जब पूरा प्रक्रिया पार करने के बाद दौर के बाद फिजिकल होता है, मतलब मेडिकल होता है, और सब बहुत मुश्किल से, सब जितना बाधा है ना सर बहुत मुश्किल से पार होता है, ठीक है। और उसके बाद जब ऊपर से नियम आ जाता है कि सारे पुराना जो प्रोसेस हुआ है उसको रद्द कर दिया गया है। अब बताइए सर, आर्मी का जो जवान तैयारी किया था पूरा अपना देह टूट जाता है, और उसका जब ये निर्णय आ जाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर, बताइए। आप लोग को क्या आपत्ति है? और ये जो नया स्कीम है उसमें आप लोग जाएंगे, दौड़ने के लिए जाएंगे? मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे। बहुत ही तकलीफ है, इस नियम का हम लोग बहुत विरोध करते हैं। इस नियम से कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। सैनिक का मनोबल टूटेगा, मोरल डाउन होगा, उसके बाद निष्कासित हो जाएंगे जब, तो उनको क्या कहा जाएगा समाज में? निष्कासित वीर हैं, अग्निवीर नहीं, निष्कासित वीर कह के उनको व्यंग करेंगे लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है कि आप जाएंगे अभी जब बहाली होगी तो आप लोग जाएंगे उसमें? देखिए, ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आया है, हम एक बार मेहनत करके हार चुके हैं। अभी मेरा फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो चुका था, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, और सरकार एकाएक आती है और लगता है जैसे नोटबंदी की तरह आए, कहें कि कल से ही चीज़ लागू हो गया। ये नोटबंदी नहीं है, ये 370 ये नहीं है कि आप आएँ रात को 8 बजे बोलें कि भाइयों एवं मित्रों कल से ये लागू हो रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। जितने लोग तैयारी कर चुके हैं, जितने लोग प्रोसेस, एक बार विधायक और नेता के मंत्री के बच्चों को कहिए कि 1600 मीटर 5 मिनट में मार के देखे, यहीं पे गिर जाएगा मर के। कितना मुश्किल होता है रनिंग पास करना, कितना मुश्किल होता है, वहाँ पे मेडिकल इतना टफ होता है। एक बच्चे का एक अंक का धीरे धीरे करके टेस्ट किया जाता है, जहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत होता है वहाँ से उसको हटा दिया जाता है, और वो एक बैक रात को आता है और कहते हैं कि कल से यह लागू हो जाएगा। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो नियम है बहुत बेकार नियम है, इस तरह से लाना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को लाना चाहिए अरे मौसम ही जब बदलता है तो धीरे धीरे करके ठंडा, एक्सट्रीम ठंडा होता है। आप एक बैग ठंडा गर्म से ठंडा कर दीजिएगा तो वो नहीं सहन कर पाएगा इंसान। आप इसको पैरेलल धीरे धीरे करके उसको लागू करना चाहिए था, ताकि उस हिसाब से इंसान ढल जाए। नेता विधायक और बड़े बड़े अफसरों के लड़के नहीं जाएंगे सैनिक में हम गरीब ही जाएंगे। And the Bihar government on Sunday pointed to the role of 3 coaching centres in the violence that took place during protests against the Agnipath scheme in Mussoorie near Patna. This comes a day after the Bihar police had said it was probing the role of coaching centres in inciting the violence across the state. Patna DM Chandrasekhar Singh had said that 46 people out of the 170 booked were arrested for vandalism at Danapur railway station. The video footage and the WhatsApp messages of some coaching centres have been found from the people who were arrested. मसौढ़ी में हम लोगों को कल जो इनपुट मिला है, जो लोग अरेस्ट हुए थे उनके मोबाइल से जो हम लोगों ने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो उसमें 2 कोचिंग संस्थान का मिला था पहले, एक और कोचिंग संस्थान का हम लोगों को मिला है। तो मसौढ़ी से कुल 3 कोचिंग संस्थानों का हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिला है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम लोगों ने कुल लगभग 23 FIR किया है, और नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो है वो 147 अभी तक हुई है। Meanwhile, government sources have indicated 35 WhatsApp groups have been banned for allegedly spreading fake news about the centre's new Agnipath scheme. The ban comes amid violent protests over the planned short-term recruitment in the armed forces, which is set to start this year. The military has accused coaching centres of instigating the young people.
Let's get you the latest from Assam. It's still a grim situation in the state, but an orange alert has been imposed across the northeast. But this is from the red alert, it's been changed to an orange alert now. But what we do know is 9 people have died in the last 24 hours. 33 districts still remain affected in Assam. 42 lakh people are affected by the massive deluge. 9 more people have died in the past 24 hours, according to the latest information we can share with you. Over 5,000 villages are currently inundated. River Kopali is flowing above the highest flood levels, and the Brahmaputra is also flowing over the danger mark in 3 places. The Meghalaya government has sought financial assistance of 300 crore rupees from the centre to meet the losses sustained by the flood and landslides. What we can tell you about Tripura at the moment is the flood situation has improved marginally. It's improved since yesterday with no fresh spell of heavy rainfall, even as 1 person was feared washed away in the gushing flood waters, according to the latest developments shared by the officials. My colleague Ratnadeep Chaudhary joins us on the phone line. Ratnadeep, has the situation eased this morning? Well, there has been no rains in the morning, and the rains have weakened overnight as well. In fact, even today there is an orange warning for rains in Meghalaya and Assam. So, in terms of rains, yes, the rains have weakened a bit. So that is kind of a respite for people, and particularly for the government agencies who are involved in rescue and relief operations, because incessant rainfall had created a lot of trouble in rescue and relief operations. But however, if you look at the overall situation, the flood situation remains extremely grim, given the fact that out of 35 districts of Assam, 33 districts are flood affected. 42 lakh people are affected by the floods. About 1,80,000 have been moved to relief camps. Now 9 people have died in the last 24 hours. That would make the death toll in 1 week to 33 in Assam, and over 5,000 villages are inundated. And most important, in central Assam, in areas like Kampur and Hojai, the inundation is huge, because the Kopali River there is flowing above its highest flood level for the last 3-4 days. And that is an area where more rescue operations are taking place at this moment. Also, the Brahmaputra is flowing above danger level in 3 places. 6 other rivers, particularly in lower Assam region, are in full speed. So, although if the rains have weakened, if this rivers breach embankments, because breaching of embankments in lower Assam has been a real problem. So there are chances of more areas getting inundated. In Meghalaya, the situation has improved a bit, and the state government has actually returned to centre for a financial aid of 300 crores to meet up with the infrastructure loss that has taken place. The chief minister himself was yesterday at the site on the National Highway 6, where the National Highway had caved in, and the restoration work has been fast-tracked. And last night he tweeted videos saying that on a trial basis, movement of vehicle has started. Today, around 9:30 in the morning, Assam Chief Minister would be holding a major flood situation review involving all the agencies and all the deputy commissioners. So after that, Assam will, in all likelihood, form up the strategy for this week in case there are more rains, and how they will take forward the relief and rescue operations. But the overall situation still remains grim, although the rains have weakened a bit. Ratnadeep, stay safe, and thank you so much for joining us with the latest details. Slight respite, but still a very grim situation in Assam. An orange rain alert has been imposed across the northeast. With that, we're stepping into a very short break. News and updates continue on the other side. Do stay with us. Good morning, it's 9 a.m. You're watching NDTV 24/7. I'm Parmeshwar Bava. The top story we're tracking this hour: precautionary measures are being taken in many states ahead of today's Bharat Bandh call given by armed forces aspirants who are protesting against the Agnipath scheme. The government has ruled out a rollback of the scheme, and 350 trains have been cancelled in Bihar, which has seen violent protests over this new scheme. These are the latest shots coming in. The Bihar government has also increased security at party offices considered vulnerable. But as of now,
internet services remain shut in 20 districts of Bihar. If we look at Kerala, the police there has said its entire force will be on duty today to arrest anyone engaging in violence or destruction of public property. If you look up north in Jharkhand, schools have been shut amid the Bandh call. According to preliminary reports, we're hearing the ongoing examinations of classes 9 and class 11 have also been postponed. Meanwhile, in Gautam Budh Nagar near Delhi, the police say prohibitory orders banning large gatherings have been imposed. People have been asked not to disrupt the law and order. And Lieutenant General Anil Puri, the Additional Secretary of the Defence Ministry, has said the centre did not give concessions in the Agnipath scheme because of protests and arson, but that those were already in the works. He said the Agnipath planners did not anticipate the protests because the armed forces stand for discipline and only disciplined applicants will join the former. देखिए हमें चाहिए क्या? यूथ. नो यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है. इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे. उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में. जैसे ही 3 दिन निकले और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ. नो, ये प्लान था. ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे. ये देश की ताकत है. इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है. ये प्रावधान करा गया है. एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी. पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%. कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन. कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी. तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो. Meanwhile, the Congress has just started a press briefing. I'm told Ajay Markin is currently speaking. Let's listen in. आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया. लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं. ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं. ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं. 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं. उसमें से 5310 केस, 5422 में से 5310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं. 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं. 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के. तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है. और ये दबाव, इसको अगर नाम और संज्ञा दी जाए तो मैं इसको ग्लो एंड लवली स्कीम कहना चाहूंगा. ग्लो एंड लवली स्कीम. ये ग्लो एंड लवली आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फेयर एंड लवली एक क्रीम आया करती थी. तो फेयर एंड लवली क्रीम का नाम अभी हाल में बदल करके ग्लो एंड लवली इसका हो गया. तो ये ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है, और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो,
भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफा चट साफ होकर के वो बाहर निकल जाता है। उदाहरण हेमंत बिस्वा शर्मा जी, क्या हुआ? लुइस बर्जर और शारदा घोटाले केस में ईडी ने बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफा चट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे मुकदमे चल रहे थे, और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का ये इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर वर नॉट satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said. तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सिलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की एक कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां, क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं? और अगर है
अनुसूचित अपराध और एफआईआर, तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और 2 बातें मुख्यतः लेकर के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। एक, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है और पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश है, हमारी मांग है कि इसको स्कीम को एकदम से वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाए और युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बात करी जाए और उसके बाद में कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जो कि युवाओं से संबंधित है, सेना में भर्ती से संबंधित है। उससे पहले इसको एकदम से वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम लोगों की यह है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय पे हमला हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, जिस तरीके से उनकी पुलिस ने प्रताड़ना करी है, प्रिविलेजेस कमेटी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है, स्पीकर को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी, कि वो इसको प्रिविलेजेस कमेटी में दे, इसकी जांच करे और राष्ट्रपति जी को हम लोग इसके बारे में भी साथ में ये बोलेंगे। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आज हम जानकारी में लेकर के आना चाहते हैं अग्निपथ के बारे में। एक यहां पे आने से पहले किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का था वादा, ना रैंक ना पेंशन का है इरादा, क्या हुआ तेरा वादा? अग्निपथ स्कीम का मतलब नो रैंक नो पेंशन और 4 साल की सेवा के बाद भरी जवानी में रिटायरमेंट का टेंशन। इसके अलावा अग्निपथ की स्कीम कुछ भी नहीं है। जो हम आज मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं, आपको हम लोग सर्कुलेट करेंगे। एक ये सर्कुलर है अक्टूबर का 2020 का, जनरल बिपिन रावत सीडीएस के उनके टाइम का, और साथ में उनका ये इंटरव्यू है जो उन्होंने एएनआई को दिया था। और इस इंटरव्यू के अंदर जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं कि सेना में सैनिक 17 साल के बाद में काम करके रिटायर हो जाते हैं, तो उनको रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। तो जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं, उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है और जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष करनी चाहिए, और 58 वर्ष हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज होगी तो हमारी सेना को बेहतर वो सर्व कर पाएंगे, हमारी सेना बेहतरी के ऊपर जाएगी। ये जनरल बिपिन रावत जी के खुद का ये कहना था और उनके टाइम का ये सर्कुलर है जो हम अभी आपको दे रहे हैं। तो जो अभी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं, तो क्या ये उनका अपमान नहीं, उनकी याद का, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान नहीं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, क्या उनकी सोच और उनकी इच्छा का ये अपमान अग्निपथ स्कीम नहीं है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जनरल बिपिन रावत ने ये कहा इस इंटरव्यू में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके सुना रहा हूं। हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर, घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल बिपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है। कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल बिपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो सर्कुलर और जो बिपिन रावत जी की जो सोच थी उसको क्या अनुसरण करने की कोशिश करी? जब हमारे सेना के अभी के सर्विंग जनरल्स, पुराने जनरल्स, बहुत सारे लोग
जितने भी विशेषज्ञ हैं सब ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिटायर नहीं करना चाहिए। तो सरकार ने 17 वर्ष में जो रिटायर होते थे उसकी जगह अब 4 वर्ष में रिटायर कर रहे हैं, जिसमें ये कहते थे कि इनको 58 वर्ष तक के इनको रिटायर करना चाहिए। अब जो है सरकार उनको मात्र 21 वर्ष के ऊपर रिटायर कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो हम अंत में फिर से सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम सीडीएस जनरल विपिन रावत कि कम से कम उनका अपमान ना करें, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान ना करें, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारा बड़ा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये एजिटेशन, सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोग सरकार को ये कहते हैं कि सरकार भी आज की स्थिति से अपनी जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। सरकार का ये फर्ज था कि इस प्रकार की स्कीम लेकर के आने से पहले व्यापक चर्चा करते और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते। युवा जो अपने 2 वर्षों से, जब से भर्ती बंद है, जब से तैयारी कर रहे हैं और सरकार उनके जख्म पे नमक छिड़क रही है और उनके मेहनत का और बेरोजगारी का अपमान एक तरीके से कर रही है, तो ये Right, sharp remarks there by the Congress leader Ajay Maken. He claims leaders who assimilate in the BJP from other parties are spared from the weaponization of central agencies. Also, the Congress party demanding that the new Agnipath scheme be withdrawn immediately. Now, for a counter voice, we have Mahesh Verma of the BJP joining us on the broadcast this morning. Mahesh Verma, now clearly Ajay Maken has said that those people who jump ship from other parties, when they enter the BJP, they are spared from the weaponization of central agencies. Your first remarks. देखिए, अजय माकन जी का जो एक आरोप है हमारे ऊपर, वो एक भी व्यक्ति का नाम बता दें जो बीजेपी ज्वाइन किया और उसको किसी तरह से बीजेपी ने क्लीन चिट दिया हो या किसी एजेंसी ने क्लीन चिट दिया हो। अजय माकन जी देश के एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं, उनको जो है कानून की जानकारी भी है। उसके बावजूद भी अगर वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और कोई भी एफआईआर और कोई भी एजेंसी कोई भी मुकदमा दर्ज करती है, केस दर्ज करती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही उसकी कोर्ट के प्रति होती है, कानून के प्रति होती है, किसी सरकार के प्रति नहीं होती है। तो ये उनका आरोप बिल्कुल बोगस है, बेबुनियाद है और इस तरह की बातों को करके वो लोग जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ईडी में जिस प्रकार से अगर यही बात थी तो बेल राहुल गांधी जी को नहीं लेना चाहिए था। बेल नहीं लेते तो ईडी आज उनको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ के लिए जो है पीसी मांगती कोर्ट से और ले जाके पूछताछ करने के बाद उसके बाद जेसी में डालती, जैसे चिदम्बरम साहब के साथ किया। अब उन्होंने बेल ले लिया, बेल के दौरान उन्होंने बॉन्ड भरा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएगी मैं हाजिर रहूंगा। Right, but Mahesh Verma, the Congress just said, Ajay Maken just said at the Congress press briefing that they made parallels to the Fair and Lovely changing their product name. They said this is almost like a Glow and Lovely situation as far as your Agnipath scheme is concerned. They said it's a Glow and Lovely situation, and almost as if your party tries to change things around in a bid to improve their image. What would you say to that? नहीं, ये तो अग्निपथ को लेकर जिस प्रकार से एक प्रोपगंडा और जिस प्रकार का दुष्प्रचार इस देश में किया जा रहा है, हम सभी भारतीयों का ये ड्यूटी बनती है कि इस तरह की चीजों को जो देश के हित में है, जो हमारे लोगों के हित में है, जिससे देश की सेना मजबूत होती है, युवा हमारे मजबूत होते हैं, देश हमारा मजबूत होता है, उसको लेकर इस तरह का बेबुनियाद दुष्प्रचार करना और उसमें जो है ये दिखाना और ये समझाना। अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमारा तो कोई हाथ ही नहीं युवाओं को, अब ये खुद सड़क पे उतरे हैं। एक बात। दूसरी बात कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज दिखाई दे रही है जो कि शॉर्ट कमीशन अभी तक सर्विस थी जो आर्मी में, जो इसमें नहीं है, जो पहले से कांग्रेस करती आ रही है। अगर वही काम अगर हमने कर दिया तो वो पाप हो गया और जो वो पहले वो कर रही थी तो वो पुण्य हो गया।
देश को ये भी समझना चाहिए. But Mahesh Verma, I understand your point. I understand that yes, this is politics at play. Whether it's optics, there's a big question mark still. But angry protesters are saying this scheme is just a placebo being given to unemployed youth, and sending your child to the army for 4 years without the lack of job security, without a safety net, is quite concerning. Wouldn't you agree? इसी बात को कल सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, हमारे जनरल, हमारे जो हाई रैंक ऑफिसर हैं, जिनको ये आके बताना पड़ा, समझाना पड़ा, क्योंकि ये प्रोपगंडा, एक दुष्प्रचार बच्चों को मालूम नहीं है कुछ. उनको बताना पड़ा कि हम सारी सुविधा वही दे रहे हैं जो एक कॉमन तरीके से, जो एक भत्ता है, जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो उनका रिजर्वेशन है, और सारी चीजें, जो चीजें वो उनकी आशंकाएं थी, उनको कल दूर किया गया, खत्म किया गया. अब इसके बाद इनको लग रहा है कि कहीं बच्चे वो जो है सड़क से, या वो जो आज जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं, या कह लीजिए कि उन बच्चों से जो ये गलत काम करा रहे हैं, कहीं वो कहीं वापस घर न चले जाएं. तो इन्होंने आज ये ड्रामा शुरू कर दिया कि अब हम करेंगे. तो ये दिस इज टोटली द, यू कैन से कि ये एक जो प्रोजेक्शन और प्लानिंग है कांग्रेस का, वो चीजों को, अपनी चीजों को डिरेल करने का. ईडी में आज जो राहुल गांधी का जो मैटर है, वो क्रिस्टल क्लियर है कि राहुल गांधी जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं ये क्यों ना मानूं कि कांग्रेस जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट का, एक ऐसे चीज का जो देश हित में है, जनहित में है, उसका विरोध करके लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रही है. Right, Mahesh Verma, thank you so much for joining us on the broadcast this morning. Right after the Congress has issued sharp remarks against the BJP, Mahesh Verma saying the Congress's allegations are baseless. With that, we're slipping into a very short break. News and updates continue on the other side. Do stay with us. It's 9:30. You're watching NDTV 24/7. I'm Parmeshwar Bava. The top story we're tracking at this hour: Congress leader Rahul Gandhi is scheduled to appear before the Enforcement Directorate again today for a fourth round of questioning in a money laundering case. Rahul Gandhi had earlier requested ED to defer his questioning due to Congress President Sonia Gandhi's health condition. Remember, she's been in hospital owing to COVID-related issues since the 12th of June. Now, this would be the fourth day that Rahul Gandhi is being questioned by the agency in the alleged money laundering case connected to the National Herald newspaper. His last three questioning sessions were accompanied by protests on the road by Congress workers and leaders, and a crackdown by the police in the form of large-scale detentions. Meanwhile, the Congress has decided to change its protest strategy as Rahul Gandhi visits the ED offices again. This time, the party plans to continue the protest it started at Jantar Mantar, the designation protest site of the national capital. My colleague Akshay Dongre joins us on the phone line. Akshay, the Congress taking the protests off the streets and camping out at Jantar Mantar today. What details can you share with us? Well, this seems to be a very well thought strategy as far as the Congress protests are concerned. We saw that yesterday as well. Senior Congress leaders, including Priyanka Gandhi Vajra, then there were other senior leaders like Sachin Pilot, Dipendra Hooda, Jairam Ramesh, Salman Khurshid. All of these leaders were yesterday camping at Jantar Mantar. In fact, for several hours they sat there protesting. But yesterday's protest was mainly against the Agnipath scheme that has been brought by the central government. Fiery speeches were made. Priyanka Gandhi Vajra even went to an extent to say that the new Agnipath scheme will kill the youth of the country. And today, the Congress party has tweaked the strategy a little bit, because earlier when the Congress leader Rahul Gandhi was being questioned by the Enforcement Directorate in the money laundering case, the Congress party tried to protest, especially outside the All India Congress Committee headquarters in the national capital. But we saw that after repeated protests, there were detention of several of the members of parliament, several of the leaders of the Congress party, and that exactly is the reason that the Congress party has, in fact, given a call to protest, to continue with the protests at Jantar Mantar, the designated protest site, as you rightly mentioned, in the national capital.
So the protests will continue till when? That is a question. Today again, Rahul Gandhi will be questioned by the Enforcement Directorate. There is already anger smearing as far as the entire country is concerned, the youth is concerned. So while the youth, especially in states like Bihar, Haryana, continue to protest on the streets against the Agnipath scheme, the Congress party will take the protest and in solidarity with the youth at Jantar Mantar to prevent any kind of detention of the leaders, which in fact we saw had become a huge controversy as well. So the protest will continue. The youth continue to protest against the Agnipath scheme, whereas the central government has clarified yesterday that the Agnipath scheme will not be rolled back, and all the concessions and relaxation that were given recently by the armed forces, that was in fact a decision that was already in the pipeline and was not done because of any arson or protest that has been happening across the country. Akshay, thank you so much for joining us with the latest. We will, of course, revert to you as the day progresses. Meanwhile, Ajay Makin had strong remarks against the BJP. He also said the central agencies have a tendency to weaponize, I beg your pardon, he meant the ruling party has a tendency to weaponize central agencies against the opposition party members. Let's listen in to what Congress's Ajay Makin had to say on the selective leaks. हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी। My colleague Arvind Gunasekar is out at the ED office. He joins us live currently. Arvind, day 4 of questioning for Rahul Gandhi. What's the plan of action? Parameshwar, Rahul Gandhi will be appearing before the Enforcement Directorate officials for the 4th day of questioning here at the National Capital. Earlier, he has been questioned for almost 30 hours by the Enforcement Directorate in connection with this alleged money laundering probe that the agency has initiated based on a private complaint that was lodged before the trial court. Because the trial court has taken cognizance of that private complaint, the Enforcement Directorate has initiated money laundering probe into the alleged transactions between Young Indian Limited, wherein Rahul Gandhi has 38% stake, and the Associated Journal Limited that publishes the newspaper National Herald. So this will be the 4th day of questioning that the Rahul Gandhi will undergo here at the Enforcement Directorate office. Again, we can see a huge security deployment here at the Enforcement Directorate office in order to maintain the law and order situation here. What is also very important here is that our sources, according to our sources in the Enforcement Directorate, they have not even completed 50% of the questions that they have prepared for Rahul Gandhi, and that's why what we are being told is that even today it will be a long day for Rahul Gandhi here at the Enforcement Directorate office. The agency is also recording the statement of Rahul Gandhi in written. Also, they are also videotaping the entire questioning process. And what we are being told is that after every session, Rahul Gandhi is given the written question and answers, and he is being asked to sign. And that's why it's taking quite a long time. And what we are being told is that this particular question process will carry on for quite some time. So we are not sure whether this questioning will end today itself or the agency will again summon him tomorrow. But what we are being told is that the agency has not even completed 50% of the 50% of the questions that they have prepared. Earlier, Rahul Gandhi was supposed to appear on Friday, owing to his mother's treatment being currently treated at the hospital, Gangaram Hospital. He had sought for the deferment of the summons, and that's why he has been summoned today, and then he is expected to appear here at the Enforcement Directorate office close to 11 a.m. Arvind, as always, thank you so much for joining us. We will, of course, touch base with you post 11 a.m. when you have further updates. Switching tracks to the northeast, Assam still a grim situation. There's an orange rain alert across the northeast, but 9 people have died in the last 24 hours owing to the flood fury. Currently, 33 districts remain affected in Assam. 42 lakh people have been impacted by the massive deluge. As we just mentioned, 9 more people have died in the past 24 hours, while 33 persons have died in these floods during this entire week. Over 5,000 villages are currently inundated in the state of Assam. River Kopili is flowing above the highest flood levels, and the Brahmaputra is flowing over the danger mark in 3 places. The Meghalaya government has sought financial assistance of 300 crore rupees from the centre
to meet the losses sustained by floods and landslides. The flood situation in Tripura, meanwhile, has improved marginally just yesterday, with no fresh spell of heavy rainfall, even as one person was feared washed away in the gushing flood waters. My colleague Ratnadeep Chaudhary joins us on the phone line. He's tracking the story in Assam on the ground. Ratnadeep, has the situation eased this morning? What's the forecast for the day? Right, we are just recovering that line with Ratnadeep Chaudhary. But Tripura, slight relief this morning with no fresh spell of rain. But 33 districts in Assam remain affected. There are lots of districts that are completely inundated in the state at the moment. 9 people have lost their lives in the last 24 hours alone. And over 1.8 lakh people, that's nearly 2 lakh people, have been moved to relief camps for their safety. Right, we will work on getting in touch with Ratnadeep, but let's get you another story from the northeast where 2 police personnel, a constable and an officer were washed away in the flood waters in Assam's Kanpur area in the Nagaon district just late last night. The constable's body has been recovered. The search is currently on for the missing police officer. These are the details that the Kanpur police station has just shared with us. Right, Ratnadeep is facing a network issue. We will of course revert to him as soon as possible. Meanwhile, former Health Minister and Congress candidate in 6 Agartala constituency and in ensuing by-elections, Sudeep Roy Burman, sustained severe injuries in an attack by miscreants at Ujjain Abhoy Nagar early today. He has been admitted to a private hospital. Our sources tell us that Mr. Burman and the State Youth Congress President Rakhu Das went to a locality after hearing of an assault on Congress supporter Bapi Goswami. Now what we do know is Congress heavyweight candidate Sudeep Roy Burman has been attacked by miscreants. The Congress alleges them to be the BJP goons. Videos reveal that the attack took place in the presence of armed policemen. Also seen in the video are miscreants damaging Congress flags and Congress property. Breaking news just coming in. The country has logged 12,781 new COVID cases just in the last 24 hours alone. Now, India's active caseload is currently at 76,700. The daily positivity rate, this is a bit of a concerning statistic. It's currently 4.32%. That's the daily positivity rate stands at 4.32%. Meanwhile, the weekly positivity rate currently stands at 2.62%. Both are marginally increases from the statistics we got yesterday from the Health Ministry. That's nearly 13,000 cases recorded in India in the last 24 hours alone. The big story from Maharashtra, the Legislative Council, the MLC biennial elections today will witness another contest between the BJP and the Congress after the recently concluded Rajya Sabha elections. A total of 11 candidates are contesting for 10 MLC seats, which are up for grabs, with the Mahavikas Aghadi, the MBA allies Shiv Sena, NCP and Congress fielding 2 candidates each. The BJP has nominated 5 candidates. Now, while 9 candidates are assured of a victory, given their current strength in the State Assembly, the main contest will be between Congress's Mumbai President Bhai Jagtap and BJP's Prasad Lad for the 10th seat. In the Rajya Sabha polls that were held for the 6 seats on the 10th of June, the BJP, led by Devendra Fadnavis, clinched all 3 seats by wooing MLAs of smaller parties and independents and through clever vote allotment. And let's take you through the international headlines. The first one from Washington, where one teenager has died in a shooting in Washington, D.C. Several people have been shot at, and a police officer is among those hit.
A shooting in Washington, D.C. has left multiple people injured, according to preliminary report shared by the Metropolitan Police Department. The D.C. Police Department has also tweeted that an MPD is responding to the area of 14th and U Street for a shooting incident in which multiple people have been shot, including an MPD officer. Media staging at 15th and U Street, Chief Conti to provide a media briefing. We will, of course, get that media briefing from Chief Conti in a short while from now. Meanwhile, DC Police Union says, we can confirm that one of our members working in the area of 14th and U Street have been shot. The member has been transported to the hospital and is currently in stable condition. There was an unpermitted event that took place in the 1400 block of U Street Northwest. There was a truck that had people playing music on it, and while this event was going on, apparently this started on social media, several hundred people began to gather in the area of the 1400 block of U Street. Most of the group was contained initially to the sidewalk. MPD members responded to the area to assist in the area, and at some point during the course of this gathering, there was some type of incident or fight that happened between some of the individuals who were in attendance. That incident was broken up. Shortly thereafter, there was a secondary incident. We're not unsure what that incident was, but people started to scatter at that point. MPD members began to shut the event down because it appeared that the event was unsafe at this point. So once the officers shut the event down, there were several MPD resources as well as public safety resources from DC Fire and EMS that were also on the scene trying to clear out the area because there were several people who were injured as a result of their leg or ankles being trampled as they tried to run from the area. Shortly thereafter, while MPD officers, while DC Fire medical services are on the scene rendering aid to the victims who were injured and moving about the area, a firearm was recovered from an individual in this area. Shortly after that, there was another incident that occurred right at the corner of 14th and U within very close proximity of our first responders. Several individuals were shot. To include a police officer. So right now we had 3 civilian persons that were shot, 2 adults, 1 juvenile, and then 1 police officer who was shot. Let's go back to the big story from Maharashtra that we're tracking. The Maharashtra Legislative Council biennial elections today will witness another contest between the BJP and Congress after the recently concluded Rajya Sabha elections. My colleague Saurabh Gupta joins us live with the latest update. Saurabh, the power play is on again. What details can you share with us at the moment? Well, you know, it's obviously a game of numbers. Every candidate who's looking to get elected as an MLC, remember Maharashtra is a bicameral legislature, which means it has 2 houses, the Legislative Assembly and the Legislative Council. And every MLC who needs to get elected needs 26 first preference votes. Now, the Shiv Sena has put up 2 candidates. They have the required numbers. The NCP has also put up 2 candidates. They need a few of the MLAs from the Shiv Sena and they also seem to have the numbers. But the battle is for the 10th seat. Now the BJP has put up an extra candidate, thereby forcing a contest with the Congress's second candidate, Bhai Jagtap. And that is where the battle is. And that, of course, is a battle between Prasad Lad of the BJP and Bhai Jagtap. And the Congress needs not only some of the remaining votes of the MVA and its own votes, but also it needs some MLAs. Now, this is, of course, voting by secret ballot, unlike the Rajya Sabha elections. And therefore, the chance of defectors defecting is also there, which is why the Congress needs to focus on keeping its flock together. So does the NCP, which is 1 vote short, and it shouldn't be a problem. But it is, of course, this entire Mahavikas Aghadi, the Congress, NCP and Shiv Sena together, that needs to get their people elected to each. And the BJP has put up extra candidates, thereby forcing a contest for the 10th seat. And that is where, of course, you see buses have been coming in, MLAs have been put into hotels. In fact, Chief Minister Uddhav Thackeray yesterday observing that we have now to keep MLAs in hotels. This is what they describe as a democracy. Clearly taking a dig
at, this kind of horse trading that happens before an election like this. And therefore, it's important politically because remember the MVA, the Maharashtra Vikas Aghadi, the alliance of the Shiv Sena, NCP and Congress, could not get their second, Shiv Sena couldn't get its second Rajya Sabha candidate elected. And that was because independents who had earlier voted with the Shiv Sena bloc or the MVA bloc seemed to have voted with the BJP. And independents, of course, did not have to show their vote to the party whip in the Rajya Sabha elections. Now, it is secret ballots. So, there is that chance of defection, which is why the Congress and the BJP will both try and get the support of independents. And if there's cross-voting, then, of course, the BJP will sail through. But if all the MLAs stick together to each side and the Congress is able to win over some of the independents, then, of course, the Congress will sail through. But it needs 26 first preference votes for each candidate to sail through in these MLC elections. As always, thank you so much for breaking down the details for us. We will, of course, revert to you for more information as the day progresses. But with that, we're stepping into a very short break. Up next, the latest international headlines. Do stay with us.